Sukhoi 30 and Mirage 2000 aircraft have crashed near Morena in Madhya Pradesh. We're getting in more details of that unfortunate development as well. But what we know is that the aircraft had taken off from the Gwalior Air Base in Madhya Pradesh, where an exercise was going on. And there are more details which are awaited. This was a fighter plane that crashed in Morena, is what we've been given to understand. A Sukhoi 30 and Mirage 2000 aircraft have crashed near Morena in Madhya Pradesh. Details are awaited. Another crash that has taken place. We're reporting on two crashes, one from Morena in Madhya Pradesh, the other one from Bharatpur. This one was a fighter jet that crashed in MP's Morena, is what we begin to understand. It took off from Gwalior, is what we know right now. These are details just coming in. The aircraft had taken off from the Gwalior Air Base in Madhya Pradesh, where an exercise was going on. So both of these aircrafts were involved in an exercise. We're waiting more details, is what sources within the Defence Ministry have said. This was a Sukhoi 30 and Mirage 2000 aircraft that have crashed near Morena in Madhya Pradesh. Awaiting more details. Pictures in fact coming in from Morena in Madhya Pradesh, where two Indian Air Force fighter jets have crashed, is what we know. They had taken off from Gwalior, and the crash has taken place in Morena, is what we know. Ravish Pal has more details on that story. Ravish, Gwalior से ये दोनों फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया था, ये कोई एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थी. डिटेल्स क्या है इस समय, कैजुअलिटीज के बारे में, इंजरीज के बारे में हमें बताइए. देखिए स्नेहा, अभी ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन जो है शेयर नहीं की गई है फोर्स की तरफ से, लेकिन हाँ ये क्रैश हुए हैं और अभी तक जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक कैजुअलिटीज इसमें नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि जो पायलट इसमें थे वो सुरक्षित थे. उन्हें जो है गांव वालों ने उनको, क्योंकि बहुत सुबह ये हादसा हुआ है, करीब 5:30-6 बजे के करीब ये हादसा हुआ था. तो और क्योंकि जहाँ पे ये हुआ है ये पहाड़गल इलाका पड़ता है मुरैना जिले में, थोड़ा दूर का इलाका है और बेहद ही दूर दराज का ये क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है. तो यहाँ पर क्योंकि ये बीच में क्रैश हुआ है, तो हालांकि ग्वालियर से जो एयरफोर्स की टीम है ये पहुंच चुकी है वहां पर, और अभी थोड़ी देर में माना ये जा रहा है कि एयरफोर्स की तरफ से इससे एक आधिकारिक सूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी, एक आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया जाएगा. अभी तक की जो शुरुआती इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक इसमें कैजुअलिटीज नहीं होने की खबरें हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो एयरफोर्स है उनके बयानों का, उनके और अधिकृत एक ऑफिशियल बयान जो स्टेटमेंट जो दोनों तरफ से आ जाए, उसके बाद ही इससे आगे कुछ कहा जा सकेगा. फिलहाल एयरफोर्स की टीम जो है वो पहुंच गई है मलबे तक. और रविश, आपका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है इसमें, और ऑब्वियसली ऑफिशियल वर्ड इज येट टू कम इन, बट कि पायलट्स जो है वो सक्सेसफुली इवैक्यूएट कर गए? अभी तक यही लग रहा है, क्योंकि जो गांव वाले उनका कहना है कि सुबह सुबह हादसा हुआ था तो उन्होंने प्लेन गिरते हुए जरूर देखा, और प्लेन गिरने के बाद ही यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ रविश. इनफैक्ट शिव अरुण, माय कॉलीग, इज ऑल्सो getting us more details. Shiv, disturbing news this morning, but what we've been given to understand is that pilots have evacuated safely. Do we have a confirmation just yet? We don't have a confirmation on the safety of the pilots just yet, but yes, we are hearing from our sources, Neha, that the pilots of the two jets have managed to eject safely, but I don't want to conjecture until we get an official word from the Indian Air Force or the Ministry of Defence. But this was a fairly serious incident. We are not sure if this was a mid-air collision or two separate incidents of the aircraft crashing, but there was an Air Force exercise that was happening under the aegis of the Central Command. This was around the Morena area of Madhya Pradesh, in airspace between Rajasthan and Madhya Pradesh, where this exercise was taking place, a pretty routine exercise that was taking place, where these two twin crashes just been reported. A court of inquiry has already happened. I understand that this happened only a short while ago, so search and rescue operations for the pilots is also currently on, from bases very close by there. There are helicopter units that are deployed in those areas.
So we're waiting now. Lots of prayers for the safety of the pilots. Remember, the Su-30 is a twin-seat aircraft, Sneha. The Mirage 2000 can be a twin-seat or a single-seat fighter. So we'll have to wait. So we don't know the total number of pilots involved in these flights. It would be a minimum of 3, maximum of 4. So we don't know just yet how many there were or what their situation is. But we are awaiting official word from the Indian Air Force. For an official word, Shiv, I'm going to thank you for the moment. Shiv is saying that there could be 2 or perhaps 4, but we are yet to, in fact, get an official word. I also, in fact, spoke to Ravish, and I'm just trying to check if Ravish is there with us. Ravish did indicate that they're expecting a statement, a formal statement. Ravish, आप कह रहे थे कि Air Force की तरफ से एक formal statement अभी किसी भी समय आ सकता है. कितने pilots थे और वो क्या safely evacuate कर गए? बिल्कुल, इसी का इंतजार बस हो रहा है, क्योंकि जैसे कि शिव ने बताया कि तो या तो 3 या 4 टोटल 3 या, क्योंकि देखिए एक प्लेन में 2 लोग मैक्सिमम इसमें सवार हो सकते हैं. क्योंकि ये 2 प्लेन बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि या तो हो सकता है एक प्लेन में 2 लोग सवार हों, पायलट सवार हो, पायलट हो, और एक प्लेन में एक ही कोई सवार हो. हालांकि जब तक ऑफिशियल वर्ड नहीं आएंगे एयरफोर्स की तरफ से, तब तक इससे कुछ नहीं कहा जा सकता. लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आर्मी जो है, वो वहाँ पहुंची हुई है. वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वहाँ कोई और तो है नहीं, क्योंकि अभी तक के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन आई है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो लोकल सोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिली है, उसके मुताबिक कैजुअलिटीज की तो अब तक कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है. लेकिन वो जो है लगातार एयरफोर्स के संपर्क में है. एयरफोर्स ही इस पर एक अधिकृत बयान जो है वो जारी करेगा, जिसके बाद ही जो जिला प्रशासन है वो अपनी तरफ से इस पूरी घटना पे जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, वो सामने रखेगा. जी, आपने कहा कि 5:30 बजे की घटना है. लोकल्स का इस समय, रवीश, क्या कहना है? उन्होंने क्या एग्जैक्टली देखा? देखिए, ये जिस जगह पे ये क्रैश हुआ है, ये एक जंगली इलाका है, पहाड़ी के ऊपर का एक इलाका है. पहाड़गढ़ करके एक जगह पड़ती है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये हुआ है. और यहाँ से जो आबादी है वो थोड़े दूर है. लेकिन उन्होंने क्योंकि सुबह का समय था, इस समय जो है 5:30-6 बजे के आसपास करीब जो है गांव वाले जाते हैं. और जिस जगह ये हादसा हुआ, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास का जंगल है, तो वहां तक पहुंचने में जरूर थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उन्होंने ये क्रैश होते हुए देखा था. तो अब ये भी देखना बाकी है, क्योंकि देखिए जितने लोग हैं सबके अलग अलग, जाहिर सी बात है, किसी को समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ. प्लेन गिरते हुए. कलेक्टर ऑफ मोरेना इज जॉइनिंग अस. अंकित अस्थाना हमारे साथ इस समय है. मिस्टर अस्थाना, इफ यू कुड शेयर मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट रियली हैपेंड. स्पष्ट जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स की टीम भी ग्वालियर से ऑन द वे है, तो ये कंफर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से प्राप्त हो चुकी है. यानी कि दोनों ही जेट्स में, फाइटर जेट्स में 2 पायलट सवार थे. अभी ये कंफर्मेशन नहीं है. किसी को रिकवर किया गया है, किसी को बचाया गया है? अभी 2 पायलट 10 मिनट पहले हम लोग ट्रेस कर पाए हैं. थोड़ा इंजरी है उनको, लेकिन वो लोग अभी सेफ है, लेकिन सुरक्षित हैं. जी, गनीमत की बात ये, राहत की बात ये. शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने. Okay, so we just heard, in fact, on our sister channel from Mr. Ankit Asthana, who has told the India Today group that the 2 pilots have been safely evacuated. So that's the big story we are getting. It's a sense of relief because we've heard from the collector that 2 of the pilots have been safely evacuated, but they've received injuries, is what the collector has told our sister channel Aaj Tak. We just heard, and we'll put that out once again. There was Ankit Asthana, the collector of Morena.